Good evening and a very, very warm welcome each and everyone on Supergrad's YouTube channel. And I'll start this particular episode with a quote. And the quote says, it's a quote that has been given by Steve Jobs. And he says, if you're working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision itself pushes you. So we have a success story in front of you all. और मैं पहले पेरेंट्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं प्रमोद साहू सर. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? And we also have Shubhradeep Sahoo, who made very big for us for Supergrad's team by securing All India rank 30. Congratulations, Shubhradeep. सबसे पहले जब रिजल्ट देखा, how did you feel? उस दिन कैसा गया? Please explain to the audiences. सर रिजल्ट तो ऑलमोस्ट इवनिंग में आया 6 बजे के आसपास जो मेल आया. तो मेरे पापा ने देखा, फिर कॉल किया. मैं एक्चुअली रिलैक्स कर रहा था, कॉल आया, फिर मैं चौंक गया. एंड देन मैंने फिर पापा ने क्योंकि पापा की ईमेल पे आया था, तो पापा ने अपना पासवर्ड दिया. मैंने खोल के देखा, फिर वेबसाइट पे देखा. फिर क्योंकि मेल पे रैंक नहीं आई थी, फिर मैंने वेबसाइट खोल के देखा तो रैंक देख के चौंक गया मैं. मेरे को लाइक आई बिकेम नम बिकॉज इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव. सो प्रमोद सर, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था. मेरा मोबाइल हैंडसेट का ऊपर आया मैसेज, एक्चुअली दैट मेल रादर रेडिट मेल, माय मेल दैट रजिस्टर्ड मेल आई. So just I was expecting something, but it will not be so soon and so sweet for me. So when I saw, just I could not control myself. Immediately I contacted my son. He was rather in prayer at that time. So I told my wife. So I wanted to connect him directly, but he was sitting because it was evening time. He was sitting in his daily prayers. Okay. So I told my wife and I told just you tell Sai because his nickname is Sai. Just connect him. Nickname is Sai. Okay. All right. I would like to understand what motivated you to join Supergrad's Top Rankers at point of time, and इस coaching program में Supergrad's Top Rankers ने कैसे help किया to get your dreams come true? मैंने तो जैन में ज्वाइन किया था 2024 जैन में. तो एक AIOM हुआ था, ऑल इंडिया मॉक. तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं कहाँ से कंटेंट ढूंढ सकूं. एंड मैंने इंटरनेट सर्फ किया, तो मैंने सुपरग्रेड का नाम ढूंढा. कोइंसिडेंटली कुछ दिनों के अंदर ही वो AIOM होने वाला था. तो फिर मैंने दिया और रैंक काफी अच्छी आई. देन आई गॉट. में पहले से पता था? मैंने 12th की शुरुआत में चालू किया प्रेप करना. सो आई प्रेप फॉर. सो दैट इज द थिंग. And I feel, my journey was, I won't say smooth, but I feel smoothened by Supergrads because of the content, the videos, the classes, as well as the material, everything. So it wouldn't have been possible without your mentorship and assistance. All right, sir. And आपको कैसा लगता है, sir? Yeah. आप कुछ कह रहे थे? Especially the mock at Kamak Street, it was very nice and helpful for him. I personally went to the Kolkata Center of Supergrads and requested the head there to conduct mock interviews for me. मैंने Supergrads का unfortunately online नहीं दे पाया, लेकिन offline मैंने सेंटर पे कोलकाता सेंटर में जाकर मैंने मांगे. तो उन्होंने कंप्लाई किया और फिर 2 बार मैंने मॉक्स लिए और बहुत ही अच्छा गया. लाइक बहुत ही अच्छा फीडबैक था. सीखने को मतलब टिप्स बहुत मिले, क्योंकि पहला वाला इतना खास नहीं था. फिर दूसरे वाले में वर्क अपॉन किया, तो मैं इंटरव्यू के वक्त भी काफी हेल्प हुआ इन एडिशन टू द रिटन पार्ट. सो जितने स्टूडेंट्स हमको सुन रहे हैं, शुभ्रदीप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि दैट ही इज फ्रॉम आवर श्योर शॉट बैच एंड ही श्योर शॉट इज आवर ऑनलाइन बैच. एंड साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ही इज पर्टिकुलरली mentioning it over here that he also took support of the offline center, Kolkata offline center. वहां पर जाकर he went for some mock interviews over there. Okay, Shubhradeep, I just want to understand a few more things from you over here. I mean, certainly in this particular journey, some section really troubles us. Which was the one for you, and how did you overcome that? That troubled me on the day of the exam also, which was QA MCQ. अच्छा, ठीक है. Yeah. So उसमें मैंने बहुत ट्राई किया. कोर्स बढ़े, बट ऑब्वियसली बढ़े, लेकिन मे नॉट बी द बेस्ट. मतलब आई वाज स्टिल डिससैटिस्फाइड विद दैट सेक्शन. उसमें मेरे आई गेस 3 मार्क्स नेगेटिव के भी चले गए. तो QA MCQ वाज द कंसर्न फॉर. प्रमोद सर, इस पर्टिकुलर जर्नी में मैं जानना चाहता हूं कि आपने शुभ्रदीप में या साई में क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ जर्नी? Actually, ये जो IPM decision itself, this was accidental, frankly, because as my son told, it was accidental. My son told he started preparation towards end of 11th, rather starting of 12th.
because our plan from beginning it was like that up to class 8. So I was closely watching the activities and the interest of Sai up to class 8 because he was in ICSE board. So class 9 and 10 there was an option for taking either economics or commerce or this computer science, computer applications as a subject. Mhm. So since I was closely observing him, I found that he is more interested towards humanities like subject management oriented subjects like that. So he decided that he will take economics. And Okay. our plan was that the plan A was he will study economics either in SRCC, Delhi University or St. Stephens, and he will prepare for civil services. That was the plan A. And Right. plan B was economic honors. He will be doing Indian economic service in case he fails in civil services. The plan C was a career in economics. That was the original plan in class 9. Okay. But I don't know, accidentally, when he was in towards end of class 11, his mother, other ones we are discussing in the evening, my wife and me, and she told IPMAT is option, why don't we give? Because it is not stopping us from applying for civil services once he Right. comes out management institute, and his career will be also secured because in economics and civil services there are so many competitions. But once you go to a good public MBA school, then definitely your job, your career is good and the job is secure. Thereafter, also, if he wishes, he can also apply for civil services. So that was the accidental journey. So we all decided to start preparing for IPMAT. So Great, he great. I started. think, this usually happens, because, we are into one particular path that really something turns up that takes us to a completely different path. Then he started preparing for it, and today, on your rank 30 is in front of you guys. Now, next question to you once again, Shubhradeep. I just wish to understand, can you share a specific moment where, during the preparation that boosted your confidence immensely? Confidence. Yeah. I would say I won't say I was very very confident at any time to be very frank क्योंकि like Okay. मैं जब देखता था अपने रैंक्स को देख फॉर एग्जांपल अगर 200 लोगों ने दिया है और मैं 10th आया हूँ तो वो मैं रेशियो लगाता था कि अरे 10th आया हूँ 200 से होगा भी लगा कि नहीं रहा हूँ होगा? कहीं हाँ, हाँ वो तो ज्यादा होगा फिर हाँ, तो आई वोंट से कि ऐसे कुछ मतलब मैं इतना थोड़ा काम का रहने वाला हूँ इतना ज्यादा आई डोंट गो अप और डाउन तो ऐसे कभी हुआ नहीं आई वाज all काम right. थ्रू आउट You were calm throughout, or certainly, and really, so this is a different perspective altogether to this particular question, but a fantastic perspective. Now, next question. Yes, you mentioned initially that Supergrad's top rankers smoothened your journey, and that were your words. I wish to understand bit deep dive into this smoothening word. Who all mentors actually helped you, and really, if you can name them also, because they'll really feel happy after listening to So in my batch, like as I said, I used to do. I prepared only for Indore, so I did not study LR because all LR right. नहीं आता है उसमें. एला नहीं तो आता है मैं राइट QA और ये फॉलो करता था. तो राइट मेरे जो बैच में शॉर्ट बैच में अनिल सर लेते थे मैथ्स ओके QA एंड सना मैम तो उनसे काफी हेल्प हुआ लाइक लॉट ऑफ असिस्टेंस आई गॉट जो वर्कशीट्स देते थे जो सॉल्व करते थे क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड्स भी आने वाले थे तो कम से कम मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग्स देख लेता था so but it is all their blessings and their teaching that has helped me And each mock year. also. Yeah, and About mocks are. yes, Yeah. and the mocks to the standard. Sir. Obviously, it was higher than जो कि असली एग्जाम असली में एग्जाम से आया. टफ था राइट तो स्कोर भी असली एग्जाम में थोड़ा ज्यादा ही आया Sir, जितना. sir. अ, हाँ, तो वही है. Sir. प्रमोद सर स्पेसिफिकली वांट्स टू मेंशन समथिंग एंड सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर और इस जर्नी में सुपरग्रेड्स ने जो भी चेंजेस सुपरग्रेड्स की वजह से आपने नोटिस किए शुभ्रदीप में या साई में वो प्लीज आप मेंशन करिए एंड किसी को आप स्पेसिफिकली कुछ कहना चाह रहे थे जो आप कान में बोल रहे थे अभी शुभ्रदीप वो को आप कह रहे ओपनली कह थे दीजिए एक्चुअली जो वो वो कह रहे थे कि जो ऑफलाइन मैंने इंटरव्यू दिए सज्जल सर उनका नाम मैं लेना उनका नाम भूल जरूर गया लो था तो सज्जन सर का भी सज्जल नाम सर एट कोलकाता सुपर ग्रेड्स हु हेड्स कोलकाता सुपर ग्रेड्स तो उन्होंने 2 बार लिए काफी अच्छे थे एक्चुअली एंड बहुत टिप्स मिला तो वो आई हैड टू कीप इन माइंड सो दैट गिव अ फिलिप टू माय इंटरव्यू प्रेप आई वुड से सो वो कहना चाह रहे थे मैंने राइट 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 Yeah. सजन. The sir's इनफैक्ट name he could not. या Yeah. Yeah. इनफैक्ट I would like to understand from you also Pramod sir कि this is the phase when student prepares very very hard and उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई सपोर्ट मिल जाए तो इट फिल्स लॉट ऑफ गैप तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
किस तरीके से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुभ्रदीप को सपोर्ट मिला, एंड हाउ ही कुड अचीव फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग? तो आपने उस जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है, अगर आप कुछ बता पाए तो। Actually, frankly speaking, he started his preparation from that usual guidebooks, some खुद से, AK Sharma ओके, or सेल्फ something like प्रिपरेशन ऑल, that. या। So he started from the beginning of the 12th, that is standard 12. But in between, after 6 or 8 months of his preparation, then he felt some extra help is required actually. राइट। So he did some online here, there, and something like that. So in the process, as he has already explained, so he also came across Supergraph. ओके। So thereafter he told that, Papa, this is I am finding very interesting, and the type of question, the standard of question which comes really in the exam that matters, that guidebooks were just not that helpful. I That weren't just helpful that much. so he got a lot of help from Supergrad and some other online materials. Okay, that's great. That's really great. And sir, I would also like to know your role, madam's role in this particular journey. कि मुझे कहीं ना कहीं एक फील आता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड हाउ डिड यू सपोर्ट हिम ड्यूरिंग दिस जर्नी so that he exactly reached over here? Actually, basically, I am an Indian Engineering Service Officer. I am basically mechanical engineer. Right. I started from Raurkela. So I know how tough these entrances and all those. So always I used to advise him, give your best, don't be worried, because this is not the last in the life actually. Right. We planned something else, this came accidentally. Yeah, this came accidentally. And keep faith on God, and you go on working. So all the time, even this 1 month he prepared for interview after publication with the written result. That was the time which was really crucial for the reason being 35% weightage in the interview. Right. So if you fail also there, if you don't perform well, and this is the thing where you have to face the interviewer face to face. Reading examination is different. You may do wonderful, but in the interview it may go both the ways. Completely So true. be comfortable. Don't be under stress anytime. Give your best, prepare well. So he got support from Supergrad mainly and some other institutions, and ultimately he did well. When he came out from the interview hall, he was really happy. He was just smiling. Just I gave a kiss to him in the hotel Taj Bengal, and we were hopeful, but the 30 was a surprise. Rank 30 was a Yeah, surprise. that was a huge surprise, right? Shubhradeep, in fact, if you can throw some more light on the interview journey with Supergrads, because you also missed some interviews, then you actually went to Kolkata Center where Sajjan sir is helping. If you can throw some light on that particular aspect also. So yeah. So yeah, interviews unfortunately online मैं दे नहीं पाया because I also for interview I also took help from another institute. So they had also scheduled some online interviews for Okay, me okay. around 2, and then I gave around 2 or 3 offline. So I gave 6 in total. In So, six but in total. Okay. talking about specifically about the Supergrad Center, I mean, I as far as I know, Kolkata Center, I was the only one who approached for, but they complied and they helped me twice. They took out time. They were actually wanting to take one more, but क्योंकि time constraint था, थोड़ा मुझे prep भी करना था. Okay. तो उन्होंने काफी गाइड किया कि जैसे पहले इंटरव्यू में मुझे याद है जब पहला मॉक दिया था तो मैं थोड़ा ऐसे लाइक कैजुअली बैठा था, वॉइस मॉड्यूलेट Right. नहीं कर रहा था. तो वो सब तो दैट बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द रियल इंटरव्यू. देन जब मैं दूसरे आई गेस 5-6 दिन के बाद एक और देने गया तो थोड़े इंप्रूवमेंट्स थे, क्वेश्चंस अलग टाइप के पूछे, तो उस हिसाब से वो भी मुझे मालूम चला कि ओके इसके लिए भी प्रेप करना है. तो वही था. और एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जो कि एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछा पूछे गया. जाते हैं. Right. Okay. एकेडमिक फोकस था. Nice to hear these things from you. Now, the most important part, and most important part for the students who are going to write this exam in 2025 and 26. Really, there is some strategy that on which you have worked on. Now, अब तुम्हारा दायित्व है कि वो किसी और को पास हो and वो उसका फायदा उठा पाए. So, what all strategies did you use to get over here and to get inside IIM Indore? As sir, my father said that thoda sa it was a little unstable the initial journey. I mean, not a lot of assistance and all. I would say, of course, maybe self prep may work for some, may not work for some also. But if obviously taking assistance is an option. Like I came late, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त है, लेकिन आप जल्दी ले लोगे तो आपका भला हो जाएगा. So I would say I used to maybe 3 to 4 hours QA and VA combined I used to practice daily because this is an aptitude test after all.
अनडिफाइंड सिलेबस हो सकता है आप कितने भी 2 साल पढ़ के गए लेकिन एग्जाम के दिन कुछ अलग आ गया। चला आ गया। एंड इंग्लिश एंड ऑल आई वुड से क्यूए के लिए मैं एक चीज करता था कि लाइक मैं द हिंदू बहुत पढ़ता था न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, इनफैक्ट हमने ह्यूमैनिटीज अभी का। यूट्यूब पे द हिंदू जी के जी, ऊपर एक वो सीरीज भी एनालिसिस, चलाई है। जी जी, तो वो मैं पढ़ता था, तो उससे मेरे को वर्ड पार में एडीसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं न्यूज पढ़ता था मेरे अवेयरनेस बढ़ती थी, तो इंटरव्यू के वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। वर्ड्स वोकेबुलरी स्ट्रेंथन हो गई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग प्रैक्टिस भी हो गया। सो दैट इज वन हैबिट दैट आई डेवलप्ड एंड आई फील, मुझे ये जितना मालूम है बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते पेपर में, लेकिन आई फील इट इज लाइक मल्टीपर्पज सर्व करता है। जैसे मैंने आपको 3 ऐसे ही गिना दिए। तो क्यूए के लिए तो इट्स जस्ट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कवरिंग ऑल टॉपिक्स। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कोई कोई शायद बोर्ड्स के बात करते हैं, तो मे बी आप जस्ट एनालाइज करो कि पिछले साल क्या है, व्हाट हैज बीन द पैटर्न, एंड ट्रस्ट मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज जिनसे ज्यादा पूछा गया आप उस पर फोकस दो। इफ यू हैव लेस टाइम, इफ यू हैव मे बी 1 year or 2 years of time, it will be smooth, you can consistently practice. And English के लिए is also, it's undefined and to a certain extent luck also, Like क्योंकि also. आप जानते नहीं हो क्या वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगे, क्या वो कैब आ जाएगा। So that is the thing. Now, last question to Pramod, sir. I think I've heard some very good answers from him, and the last one is to him. Sir, I just wish to understand. एक पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में काफी सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं एंड वी विश टू नो कि आपका रोल क्या था और क्या एडवाइस आप आने वाले पेरेंट्स को देंगे कि उनको भी यही करना चाहिए। देखिए, एक मूवी का एक स्टेटमेंट आमिर खान का, वो जो मेरा दिमाग में अच्छा से बैठ गया, थ्री इडियट्स का। अच्छा। What you do study, but the student should have the passion for that subject. राइट। Otherwise, Shubhradeep got 97.2% in 10th. In our Indian mentality, normally the student should go for science. But I didn't do that. So I will request the parents to do that. They should not torture the students. They don't have to put pressure on the boys or girls, whatever, because they are destined to do something. So they should give freedom, at least in the standard 10th, 11th, they are little matured. They can take their decision. And the parents should have a role. They should keenly watch the student, or the son or daughter, how they are doing, where they are interested. Like he took humanities. Normally in humanities, they are the worst student. That is the general perception. But अब I नाउ thought ओल्ड that स्कूल थॉट भी हो गया। अब पहले पहले जरूर ऐसा होता था, बट यस सर्टनली ये जो बात आज आज यहाँ पर प्रमोद सर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया का आज के टाइम पर एंड सर्टनली majority of us are following the herd mentality and going towards the career options that they actually do not like and taking humanities is kudos. I mean, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को ह्यूमैनिटीज लेने में, कुडोस। क्योंकि ये जो पुराना ओल्ड स्कूल थॉट है आज के टाइम पर कि यार आर्ट्स वो करेगा जो पिछड़ा है, जिसके 50% मार्क्स आते हैं, बट आर्ट्स वो करता है जो आईपीएम में ऑल इंडिया रैंक 30 लेके आता है और आप सबको दिखाता है। विद दैट थॉट आई विल से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू specifically Pramod sir for joining us and making it happen for Supergrad's top rankers. And certainly, best of luck for your future endeavors. You will remain our family forever, Shubhradeep. Congratulations as well once again. Sir, thank I you, too thank you. would like to thank the entire Supergrad team, mentors, staff, everybody, क्योंकि उनका बहुत योगदान रहा है मटेरियल बनाने में और मे बी पढ़ाने में, या फिर YouTube वीडियोस के जरिए जो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस थे कुछ। तो I also wish to thank them because I am an online student, so nobody knows me. Everybody knows me by my name. Now शायद everybody शक्ल will know पहचान। you, right? I think that would be the great part. Yeah, so Thank you very I much. just wish to Thank you. thank you Thank you. via this Thank medium. you, Super Grad team. Thank you. Thanks. Thank you. Sir. Thank you.